Hello students of class 5th. Welcome to your English class bachche. So children, today we are going to start our new chapter, that is chapter number 8 of Roots and Wings. Yes, that is Blackberries the fruit. Alright? Yes. And children, this video is going to be the first part in which I will explain this chapter. Alright. And in the next part I will discuss the exercises. Fine. In the part 2 we will be having the exercises, question answer, and then the blanks and everything which is given after this chapter. Right? Yeah. So here the name is given blackberries. What is this? These are the fruits. Okay, blackberries are the what? They are the fruits. Fine. Yes. Have you eaten those blackberries? क्या आपने blackberries खाया है? Yes, you must have eaten. And that is, आपने उसे देखा है? In Hindi you can say jamun. That will be in the dark purple color. जो डार्क शेड होती है ना पर्पल की, दैट विल बी योर, उसकी जो कलर होती है उस तरह की होती है. समटाइम्स इट विल लुक लाइक ब्लैक. इतने डार्क होते हैं ना कि वो आपको लगेंगे ब्लैक इन कलर. फाइन. येस. So these are the fruits, okay, which we get in the summer season. In the summer season we generally get it. And जब आपको वाटरमेलन मिलते हैं उस वक्त आप देखना लीची जब मिलते हैं हमें, एंड दैट टाइम वी गेट दिस ब्लैकबेरीज आल्सो in India. Fine. Yeah. Okay. So now let me tell you what are the benefits of this, what are the uses of these blackberries. हम इसे किस तरह से यूज़ करते हैं. We eat them as a fruit. Okay. We prepare some flavors. We take out some flavors from these blackberries and we add it in the flavor of cake. जब हम क्या करते हैं, केक या कोई भी पेस्ट्री हम प्रिपेयर करते हैं, बेक करते हैं, देन वी ऐड फ्लेवर्स ऑफ दिस ब्लैकबेरीज. फॉर एग्जांपल जैसे आपने सुना है ना, पाइनएप्पल फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर. इन द सेम वे वी आर आल्सो हैविंग ब्लैकबेरीज फ्लेवर आल्सो. राइट. येस. तो देन इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इन बेकिंग, देन वी use its flavor. Okay, we add flavor of its, and then we prepare cake, pie. Okay. Yeah. So here we are going to start our chapter. See, there is a short exercise given. Get set. Match the names of the various bakery products given in the box with their pictures. See, there three names are given: chocolate cake, cookies, and pastry. In the box it is given. And see, there are three pictures given and you have to identify which one it is. Fine. Is it chocolate cake? Is it cookies? Is it pastry? You have to write the name here. Oh my god, they're just mouth watering. नहीं, मुँह में पानी नहीं आ रहा देख कर. मुझे तो आ रहा है भाई, पता नहीं आप लोगों को आ रहा है कि नहीं. Because they are so delicious now, that's why. Okay, which one is that? See, come to the first picture. See, this is your chocolate cake. What is this? This is your chocolate cake. CHOCOLATE, chocolate cake. And in the second picture, it is your pastry, right? Yeah, PASTRY, pastry. And in the third one, it is cookies. जो बिस्किट्स वगैरह आप कहते हैं बिस्किट्स के शेप में, दैट दे आर कुकीज़. COOKIES, cookies. Fine. Yeah, these are the bakery products. Now we have identified it. Now moving to the next one, that is question number B. Pick out the names of any two of your favorite bakery products shown above. Tell your partner about it and ask about his or her choice. See, here the name of the bakery products are given: chocolate cake, pastry, cookies. What you have to do here, you have to just pick out two names. Which is your favorite? Okay. You have to pick up the two bakery products. Which one is your favorite? Okay. And you have to just tell it to your partner. It means you have to tell it to your friend, your classmate, and then you have to ask from them also what is their choice. उनकी क्या choice है, उनको क्या पसंद है इन तीनों में से. And they have to tell two names also. They have to also tell two names. Fine. So this will be your class activity which you will do it in your class. Okay. We can't do it on the online class. Yeah. Okay. हाँ, अगर आप मुझसे पूछोगे what are those bakery products, what are those my favorite bakery products, then I will say the first one chocolate cake and the second one pastry. Yeah, these are my favorites among these. Okay. Okay, now let's move to the next page. Okay, now come on this page, read and enjoy. See, here the name is given, then the name of the author you can say, or writer you can say. Okay. And
The one who has written this story, she is a female writer. Okay, she is a female author, and whose name is Enid Blyton. Right? Yeah. Enid Blyton was one of the most successful children's writers, and her books are still popular. The following story is an adaptation from her writing. This writer has written so many stories for the children. Okay, so she is mainly known as the children's writer. Fine. Okay, and this one is also the adaptation from her writing. Okay, so in the present lesson you are going to read the story of a child who, despite his plan to go out to collect blackberries with his friends, carries out the errand of his mother without grumbling. The result of this obedience is also wonderful. What that result is, you will come to know about when you go through the story. Here, a short summary is given here of this chapter that in this present lesson, you are going to read the story of a child and whose name is Andrew. Okay, and he was planning something, but he just, despite his plan, just because of his mother, because his mother gave him some work. Okay, she told him to she gave him some assignments, some work, and he just completed that assignment without any complaint, without any excuse. Okay, he was just agreed, okay, if mother is saying, then I have to do it. It was like that. Okay, and when it means what, here it is showing the obedience now, obediency. So when he was an obedient, then what the result of that obedience, that was also wonderful, which you will come to know in this story. Fine. See, now let's start the story. See, here the picture is given. This boy is, there is a boy. Okay, his name is Andrew. Fine. Yeah, and she is her mother. Who is here? She is her his mother. Sorry. Yeah, she is his mother. And now let's start the story. Andrew was terribly upset. He had planned to go blackberrying with his friends, but all his plans were shattered when mother called him to go on an errand, as it was very important. See, this boy Andrew, he was planning to go outside for collecting blackberries, fine, with his friends. He and his friends were had planned to go outside and to collect blackberries, but what happened, his plan was destroyed, his plan was spoiled, just because his mother called him. Okay, and she gave him some work, she gave him an assignment which he has to do. Okay, and then see, so, and that was very important, that assignment was very much important. He sounded disappointed and said, mother, I had decided to go and pick juicy ripe blackberries with Peter and Carroll. This Andrew said that, mother, I was planning to go outside to collect blackberries, to collect those juicy and ripe blackberries with my friends, and they are Peter and Carroll. जो ये एंड्री, उसने क्या बोला कि मुझे ना बच्चे, आई विल एक्सप्लेन इन बोथ लैंग्वेजेस, इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश ऑल्सो. Okay, because some of them don't understand in English and some of them don't understand in Hindi, that's why I'm using both languages. Fine, so that it will be easy for all of them. All right. Okay, I wanted you to make blackberry pie tomorrow. I simply love it. But now I have to drop my plans. But Andre said that, he said that wanted to make, I just wanted to have blackberry pie. I was thinking that I will bring all the blackberries from the garden, and then you will prepare a blackberry pie for me. You will bake blackberry pie for me, mother, tomorrow. But now I have to drop my plans because you have given me this work. So now I will drop my plan. Now come to the next paragraph. I'm sorry for that, dear, but I have to send these books to Mrs. Jones today as promised. What his mother said that, sorry bacha, because I have to send these books. Some books were there, okay, and she had to send these books to her friend, her mother's friend, you can say here. Okay, her friend, and whose name is Mrs. Jones. Okay, and because she had promised her friend, that's why she had to send all these books by today only. उसे अपनी उसकी मदर को अपनी जो बुक है, वो 4 बुक्स थे, उसे भेजना था, एंड वो आज ही भेजना था. क्यों ना, क्योंकि उसने प्रॉमिस कर रखा था अपने फ्रेंड मिसेज जोन्स से. ऑल राइट, यू सी इट्स अर्जेंट. शी लुक्ड एट एंड्रयू एज ही मेड अ लॉन्ग फेस. और उसने
उसकी मदर ने कहा दैट्स इट्स अर्जेंट, एंड शी लुक्ड एट एंड्रयूज फेस, बिकॉज ही, जब बच्चे कुछ प्लान करते हैं ना और उनको कुछ अगर वो चीज़ मतलब कुछ और काम दे दी जाए तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, थोड़ा सा उनकी फेस ना वो हो जाती है, सैड वाली हो जाती है, राइट। या तो इन द सेम वे एंड्रयू वाज आल्सो सैड हो. You don't look good with that frown. Smile, Andrew. Here the word is given frown. Frown means unhappy face. Okay. जो फेस से बनाते हैं ना अनहैप्पी वाला, दैट इज कॉल्ड फ्राउन. ओके. तो हिज मदर टोल्ड हिम दैट यू डोंट लुक गुड विद दैट फ्राउन. मतलब आप ना इस तरह की जो फेस बनाते हो ना सैड वाली तो अच्छे ही लगते हो, मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हो. सो जस्ट स्माइल एंड्रयू. हु सेड दिस? यस, हिज मदर सेड इट. She kept 4 books in a bag and continued, you will be back by afternoon. You can go blackberrying some other day. And his mother said that go and give these 4 books to Mrs. Jones, okay? And then you will be returned by afternoon, और आप तुम दोपहर तक आ जाओगे. एंड देन कभी और तुम क्या करना, चले जाना ब्लैकबेरी कलेक्ट करने को. ऑलराइट, बट टुडे इट्स नॉट पॉसिबल, सो जस्ट गो एंड give all deliver all these books to my friend. Who said this? His mother. Now come to the next paragraph. Andrew. अच्छा आप ये बताओ, आपकी मम्मा आपको कोई काम देती है, ओके, और आपको कुछ प्लान आपने कर रखा है कि आज हम खेलने वाले हैं, आपको खेलना है, कुछ भी करना हो, और आपको काम मिल जाता है तो आप कैसे एंग्री वाला फेस बना लेते हो ना. बहुत सारे बच्चे तो करते भी नहीं है मम्मा के काम को. मम्मा के काम को ना बस टाल देते हैं, नहीं मुझे नहीं करना तो नहीं करना है, मुझे खेलना है तो खेलना है, आज मेरी हॉलीडे है एंड ऑल, इस तरह के एक्सक्यूज़ दे देते हैं. एंड देन वो अपनी मदर या फादर की बात को क्या करते हैं, डिसएग्री कर देते हैं. और पता है ये क्या होता है ना, बच्चे, माँ बाप नहीं चाहते ना, कि आपके पेरेंट्स नहीं चाहते कि वो आपको अनहैप्पी करे, बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ अर्जेंट वर्क होता है तो वो उनको करना पड़ता है. तो आपको ना रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बचपन से लेना पड़ेगा कि अगर कुछ भी आ जाए, आपको जो मेन जो ज़रूरी काम है खेलना अगर है तो वो कभी भी आप खेल सकते हो. ऐसा नहीं है कि हाँ आपकी फिर हॉलीडे नहीं आएगी, बट कुछ वर्क ऐसे होते हैं जो अर्जेंट होते हैं, जो उसी दिन ही करना होता. तो आप ना अपने पेरेंट्स की बात को माना करो. फाइन. जैसे देखो यहाँ एंड्रयू ने अपनी मम्मा की बात को माना, और इसके बदले में क्या होता है लास्ट में देखना, तब आपको लगेगा कि हाँ, बीइंग एन ओबेडिएंट इज़ वेरी मच प्रीशियस. यस, एंड यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट. ओके. ओके. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. We were here. Yeah. Last paragraph. Andrew picked the bag and was on his way. He did not utter a word when he left, but gave her a smile. और जो एंड्रयू ना देखो उसने क्या किया, अपनी मम्मा को कुछ भी नहीं बोला, बस वो अपना बैग उठाया एंड देन ही जस्ट वेंट. ओके. एंड ही गेव अ स्माइल टू हर मॉम. उसने अपने मदर को ना एक स्माइल दिया और ही वेंट. ही लव्ड हिज मदर डियरली एंड लाइक्ड टू हेल्प हर वेन एवर पॉसिबल. और वो ना अपनी मदर को इतना प्यार करता था, दैट्स वाई ही वॉन्टेड टू हेल्प वेन एवर इट इज़ पॉसिबल. तो उसने ना भी नहीं कहा और उस काम को उसने कर डाला. Nonetheless, today Enid would have enjoyed with his friends. They wouldn't be able to go again to pick berries until next Saturday. And then अब ये एंड्री सोच रहा था कि अब आज तो हमने ये मस्ती नहीं की, हमें जाना था कहाँ, जो हमारी प्लान थी वो तो ड्रॉप हो गई है. अब हम ये प्लान को कब कर सकते हैं, नेक्स्ट सैटरडे ही कर सकते हैं. मतलब जो ब्लैकबेरीज कलेक्ट करने वाला प्लान था, अब हम कब जाएंगे, नेक्स्ट सैटरडे, क्योंकि जब हमारी हॉलीडे होगी तब. ऑलराइट. या नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज. Andrew came across Peter and Carrot on his way. They shouted excitedly, come along, Andrew. He said, I can't go with you today. I have got to go to deliver these books to Mrs. Jones in town. And then when he was going, then he met with his friends. Okay, Peter and Carrot. And who met? Andrew met with his friends. They were Peter and Carrot. जब वो रास्ते में जा रहा था तो उसे उसके फ्रेंड्स मिलते हैं, पीटर एंड कैरोट. एंड दे शॉटेड एक्साइटेडली. दे वर वेरी मच एक्साइटेड. हिज फ्रेंड्स वर वेरी मच एक्साइटेड एंड दे वर सेइंग टू ज्वाइन देम. वो एंड्रयू को बोल रहा था कि तुम हमें चलो ज्वाइन करो एंड दे कम अलॉन्ग विथ अस, और हमारे साथ चलो टू कलेक्ट ब्लैकबेरीज. ओके. But what Andrew said, no, I can't go today because I have to deliver these books to Mrs. Jones. Okay, what he said, I have got some work from my mother. I have to deliver these books to Mr. Jones, so I have to do this one. I can't go with you all. Okay. As soon as they went ahead, Andrew started whistling softly. Sorry, we were here now. I have left that line. They waved at him and said, oh, see you tomorrow.
As soon as they went ahead, Andrew started whistling softly. He knew that whenever he was angry, whistling lifted his mood. And then what happened? And then उसने जब एंड्रयू ने बोला कि मुझे अपनी मम्मा का काम करना है, मुझे ये बुक्स को मिसेज जोन्स तक पहुंचाना है बाय टुडे ओनली, इसलिए मैं आज ब्लैकबेरी कलेक्ट करने नहीं जा सकता. देन उसके फ्रेंड्स ने कहा ओके कोई नहीं, कल हम मिलते हैं. ओके एंड देन दे मूव्ड अहेड. एंड देन और जो एंड्रयू ना, इसकी जब मूड ऑफ होती है तो वो क्या करता है, ही यूज टू विसल, वो सीटी बजाना शुरू करता है. ओके जब वो सीटी बजाता है, विस्लिंग करता है, तो उसकी मूड ना फ्रेश हो जाता है. देन ही स्टार्टेड विस्लिंग ओके सॉफ्टली. Yeah, see, Andrew's here. Now coming to the next paragraph. When he reached Mrs. Jones' house, she greeted him with with a big smile and said, "I'm so glad you brought these books. You are a nice boy. I'm sure your mother is proud of you. You could have gone to the fields for blackberrying today like so many other children. But you came all the way here with my books." When he reached to Mrs. Jones, Andrew reached to Mrs. Jones. जब एंड्रयू पहुंचता है मिसेज जोन्स के पास, then what she said, oh thank you so much बच्चा that you have brought these books for me, because बाकी बच्चे तो अभी खेलने को गए होंगे, वो लोग ब्लैकबेरीज कलेक्ट करने जा रहे होंगे, बट तुमने वो सारा कुछ ना करके क्या किया, तुमने मेरी हेल्प की, अपनी मदर की हेल्प की, और तुम मेरे पास आए मेरी बुक्स लेकर. सो आई एम सो थैंकफुल टू यू. एंड शी सेड दैट योर मदर विल बी प्राउड टू यू बिकॉज यू आर सच ए नाइस बॉय, यू आर सच एन ओबीडियंट बॉय. मिस्टर जोन्स ने कहा तुम इतने अच्छे बच्चे हो कि तुम्हारी मदर जो है ना तुमसे प्राउड फील करती होगी. ओके यू आर a responsible person. Thank you, Andrew. Now there is a big bramble in my backyard. I don't like blackberries. You may pick as many as you want to. And then what she said, Mrs. Jones said that there is a big bramble in my backyard. उसके घर के पीछे क्या थे, बहुत सारे जो बुशेस होते हैं ना वो लगे हुए थे. ओके और कहा उसने कि वहाँ बहुत सारे ब्लैकबेरीज हो रखे हैं, ग्रोन अप हो रखे हैं, एंड देन you can go there and you can collect those blackberries because I don't like blackberries, so you can go and collect them. अब सोचो जिसके लिए उसे जाना था उसने काम भी कर लिया, वो भी मिल जाए तो कितनी खुशी की बात है. दोनों कुछ हो गया, ब्लैकबेरीज भी मिल जाएंगे और उसने बुक्स भी डिलीवर कर दिया. तो इससे मज़े की बात क्या हो सकती है ना. या Now coming to the next paragraph. Andrew's eyes shone as he ran to the backyard with his bag. The brambles was full of blackberries. He plucked them fast and with care until his bag was full. He gobbled as many as he could. The juicy berries burst in his mouth. Soon he went back to Mrs. Jones and thanked her. See, there's a highlighted word, gobbled, which means ate hurriedly and noisily. बच्चे क्या करते हैं ना, जब कुछ चीज़ उनको उनकी पसंद की होती है ना, देन व्हाट दे यूज्ड टू डू, जस्ट मुंह में जल्दी से फटाक से डालते हैं, देन वो च्यू करना स्टार्ट कर देते हैं बड़ा फास्टली है ना, जल्दी जल्दी खाना शुरू करते हैं, जिसमें वो क्रंचेस की आवाज़ आती है ना, इस तरह की. तो उसने भी क्या किया, जब then what he did, he just ran to the backyard, and then when he saw those blackberries, there were so many blackberries, then he was very much happy, and then he just started plucking them, and then he was just putting it into his bag. और वो जल्दी जल्दी सारे ब्लैकबेरीज को कलेक्ट करके अपने बैग में डालने लगा, एंड ही वॉज वेरी मच हैप्पी. वो बहुत ही खुश था. और कुछ ब्लैकबेरीज तो उसने ना मुंह में डाला, वो खाना शुरू कर दिया, बड़ा जल्दी जल्दी खा रहा था. उसे लग रहा था ना मैं कैसे, मतलब he was very much excited. He was very much happy. So लग रहा था मैं कब जल्दी से सारे ब्लैकबेरीज को मैं अपने पास ले लूँ, कुछ को मैं खा लूँ और कुछ को मैं रख लूँ, है ना. And then soon he went back to Mrs. Jones and thanked her. And when he collected all those blackberries, when his bag was full, then he just left that place, that backyard, and then he went to Mrs. Jones. And then he thanked her. फिर उसने Mrs. Jones को thank कहा, and then he went from there. Now coming to the next paragraph. See in the picture here, यहाँ देखो ये रहा बैकयार्ड में ब्लैकबेरीज तोड़ते हुए एंड्रयू, है ना. देयर आर सो मेनी ब्लैकबेरीज ना, या एंड ही इज हैविंग अ बैग फुल ऑफ ब्लैकबेरीज. ने इस बैग में सारा कलेक्ट कर रखा है ना. अगर आप लोगों को भी ऐसे मिल जाए तो आप लोग भी क्या करोगे ना, सारे इकट्ठे कर लोगे सारे, मतलब मुझे तो लगता है एक भी नहीं छोड़ोगे. नहीं, क्योंकि हम जब हम बच्चे थे ना, हम ऐसे ही करते थे. हाँ, जैसे मुझे ना बचपन में चलो मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ. शायद स्टोरी, मतलब ये स्टोरी पढ़ते पढ़ते वो बच्चे थोड़ा सा होता है ना, बुक वाली पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, तो मैं अपनी पर्सनल स्टोरी सुनाती हूँ. थोड़ा फन हो जाएगी, थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाएगा आप लोगों का. जब मैं छोटी थी ना,
तो मुझे मेहंदी का बहुत शौक था। या जो हम हाथों में मेहंदी लगाती हैं लड़कियां, वो वाली। तो पहले क्या ना था, जब मैं छोटी थी तो उस वक्त कोन वाली मेहंदी उतने नहीं थे, उतने नहीं चलते थे। हम वो ना लिप्स जो होते थे, मेहंदी लिप्स, वो हम तोड़ कर लाते थे प्लांट से, एंड देन वी यूज टू पुट इन इट ऑन आवर हैंड। हम उसे मेहंदियों को उन मेहंदियों को लगाते थे अपने हाथ पर, उनकी पेस्ट बनाकर। ओके। तो जब कभी हमारे यहाँ क्या होता था ना, मैं रहती थी रेलवे क्वार्टर में। ओके। हाँ। तो हम क्वार्टर में रहते थे, तो वहाँ क्या होते थे कि बहुत सारे घरों में किसी किसी के मेहंदियाँ होती थी, किसी के यहाँ कुछ के पेड़ हैं। तो मेरे घर पर नहीं थी मेहंदी के पेड़। ओके। मैं दूसरे जगह जाकर एक आंटी थी, उनके यहाँ जाकर मैं परमिशन लेती थी कि मैं आंटी मैं मेहंदी तोड़ लूँ। तो वो मुझे बोलती थी ठीक है जाओ जाकर तोड़ लो। और जब मैं उनके गार्डन में जाकर तोड़ती थी ना, पता है लगता था ना इतना जल्दी मैं तोड़ कर रख लूँ। मैं मतलब कितना फटाक से तोड़ूँ, क्या करूँ। मेरा बस है तो मैं पूरा प्लांट को काट के ले जाओ अपने घर, ऐसा वाला होता था। मुझे ना इस एंड्रयू को ना देखकर मुझे अपनी कहानी याद आ रही है। बिल्कुल मेरी तरह था ये, कि मतलब जल्दी जल्दी जो कहते हैं जल्दी जल्दी जितना कलेक्ट किया जा सके। जबकि ऐसा नहीं है कि मेरे पास टाइम बाउंडेशन थे वहाँ पर, बट फिर भी लगता था देख कर ना मैं कितना जल्दी से कितना एक मतलब 5 मिनट के अंदर ना मैं पूरा तोड़ लूँ, इस ये वाली फीलिंग थी। तो जो बच्चे होते हैं ना उनके अंदर ये चीज़ होती है ना। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। मैं भी फटाफट तोड़ती थी, और है ना जो भी अगर कोई भी पैकेट मैं लेकर गई उसमें जल्दी से डालना शुरू कर दिया मैंने। जो भी कैरी बैग मैं ले रहती थी उसमें जल्दी जल्दी मैं भरना शुरू कर देती थी। और अगर कैरी बैग मान लो कुछ मतलब भर गया, मुझे लग रहा और मैं तोड़ सकती हूँ, तो मैं दूसरा ना कहीं ना, पता क्या करती थी आप लोग हंसोगे। मैं ना मैं जो फ्रॉक पहनती थी ना, तो उसके उसे उस पर ना मैं रखती थी, मतलब उसे ऐसे फैलाकर मैं उसमें कुछ कलेक्ट करती थी। एंड देन फिर इकट्ठा की जगह मैं कहीं रख देती थी। एंड देन फिर मैं उससे कहीं आंटी से वो एक और कैरी बैग मैंने मांगा, एंड देन उसे फिर मैं लेकर घर जाती थी। ये रही मेरी बचपन की स्टोरी। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी था। आई मिस माई चाइल्डहुड डेज, या सो मच। ओके, नाउ कम टू द स्टोरी। She smiled affectionately and said, I'm so happy that those blackberries will be of use to someone. Your mother might make blackberry pie for you that you really deserve. And what Mrs. Jones said that this blackberry were of no use for me. Now I'm so happy that it will be of use to someone. मतलब तुम्हारे लिए helpful रहेगा, useful रहेगा. And your mother will bake blackberry pie for you, and because and that you really deserve. और उनको बनाना भी चाहिए because you deserve it. You're such a nice person, you're such an obedient boy, that's why you deserve it. Okay. Now in the last, sorry, in the next, मैं ना नेक्स्ट और लास्ट दोनों मैं कंफ्यूज थी मैं क्या बोलूँ, तो मैंने पता क्या बोल दिया, दोनों को मिक्स कर दिया, नेक्स्ट। आप भी कहोगे फरत मैम को हो क्या गया। ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट पैराग्राफ। As Andrew hurried back, he met Peter and Carlot on the way. They were surprised, and when he was returning to home, then what? Then home he said he met with his friends Carlot and Peter. Okay, और they were surprised, और ये जो उनके फ्रेंड्स थे ना, जो ये जो फ्रेंड्स थे एंड्रयू के, वो क्या थे, सरप्राइज थे। क्यों ना, बिकॉज ही वॉज हैविंग अ बैग फुल ऑफ ब्लैकबेरीज। उसके पास एक बैग थी, ब्लैकबेरीज पूरे उसमें भर रखे थे उसने। तो वो लोग देखकर सरप्राइज थे to see his bag full of luscious blackberries, whereas their bags weren't, क्योंकि उनके बैग तो खाली थे और जो एंड्रयू उसका बैग वो फुल था। Many children had gone out to the fields to pluck blackberries, so Peter and Carlot couldn't pluck too many of them. अब अगर कहीं बहुत सारे लोग हो रहेंगे तो वहाँ आप उतना ले पाओगे नहीं ना, क्योंकि सब ने लेना है, तो सब ने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा लेंगे सब लोग, है ना। वो एक दूसरे से फाइट करना शुरू कर देंगे, तुमने ज़्यादा ले लिया, तुमने कम ले लिया, एंड देन उसमें भी क्या होता है कि लोग जो पावरफुल होते हैं वो आगे बढ़कर ले लेते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो उनको हटा देते हैं, है ना। इस तरह से पीटर और कैलोट के जो कैरी बैग थे वो उतने फुल नहीं हुए थे। ओके। और जहाँ अगर आपको अकेले दे दिया जाए पूरा आपको तोड़ने को, तो आप तो पूरा ही कलेक्ट करोगे ना, अपने बैग तो फुल कर ही लोगे एटलीस्ट। या Andrew readily emptied some from his bags into theirs, and they too were glad. They went home while Andrew's mother was amazed to see his basket. And then Andrew ने क्या किया, he just gave some blackberries from his bags into their bags. He just put some blackberries from his bags to into theirs. उसने अपने बैग से निकाला ब्लैकबेरीज, उनके बैग्स में डाल दिया। और जो उनके फ्रेंड, जो एंड्रयू के फ्रेंड थे, they were so glad, they were so happy. And then they went home while Andrew's mother was amazed to see his basket.
और जब फिर वो लोग क्या करते अपने अपने घर चले जाते। और देन व्हेन एंड्रयूज मदर सॉ हिम देन शी वाज वेरी मच हैप्पी, शी वाज अमेज्ड, अरे वाह देखो इसे ब्लैकबेरीज मिल गए, मतलब उससे लगा अरे वाह दोनों काम हो गए, है ना। शी स्माइल्ड as Andrew narrated the story, and soon a big blackberry pie was being baked in the oven. Andrew couldn't wait to taste the delicious pie. And now what happened? जो एंड्री है ना, उसने सारी स्टोरी सुनाई क्या क्या हुआ उसके साथ, कहाँ से इसे इतनी ब्लैकबेरीज मिली, किसने दिया। एंड देन शी हर मदर सॉरी हिज मदर स्माइल्ड एट हिम, एंड देन शी बेक्ड अ ब्लैकबेरी पाई फॉर हिम, ओके। एंड देन in the oven she baked it, and then they were ready to eat, and Andrew couldn't wait to taste the delicious pie, and he was very much in a hurry to taste that delicious pie, okay. And in the last we can say that, so what lesson have you got from this chapter bachche? Yes, we have got the lesson from this chapter, we have got the moral from this chapter is that we should be always obedient to our parents, to everyone. We should be always obedient to our elders, okay. Yes, we should follow them, we should obey them. देखो कि यहाँ क्या हो रखा था, उसने ओबे किया तो क्या हुआ, उसने काम भी किया, अपनी मदर को भी हैप्पी कर लिया, एंड देन उसे ब्लैकबेरीज भी मिल गए, वो भी बहुत सारे मिल गए, क्योंकि उसके फ्रेंड्स को देखो, अगर वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाता तो क्या इतने सारे मिलते नहीं ना। तो क्या कहा जाता है कि सब्र का फल मीठा है, दे जाए वो आपने सुना होगा ना, एक मुहावरा आप कह सकते हो, हाँ। इसलिए वी शुड बी always obedient to our elders, okay, we should obey them, we should follow them, fine, हमें उनकी बात माननी चाहिए। So this was the story, hope you would have enjoyed this story very well। आपने इस स्टोरी के साथ साथ मेरी भी स्टोरी एंजॉय की होगी, जो मैंने अपनी पर्सनल स्टोरी सुनाई थी मेहंदी वाली, राइट, ओके। अगर मेरी स्टोरी पसंद आई है ना, चलो ये स्टोरी तो पसंद आई होगी, मेरी मेहंदी वाली स्टोरी अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी हो ना, जिससे आपके चेहरे पर स्माइल आ गया हो, आप लोग हंसने लगे हो, देन जस्ट कमेंट में डाउन, ओके। Okay, I will read all your comments. So have a good day, and thank you so much for watching the video. And if the video is helpful for you for your studies, then just do subscribe my channel and hit the like button, bachche. Have a good day. Bye bye.